skill. Customer-centric organization dealing in structural steel, MS pipes and MS plates. दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। Good morning, everybody. I'm Tushar Jain, CFO and Research Head of Ajay Astro Money Guru and Tushar Global Services.com. Welcome all of you today on 28th October 2022. As you all know, in this episode, we discuss about Indian stock markets and what all things you need to consider for next few trading days. So if you remember, in our yesterday's episode also, we were in a view that for the short term, some volatility can be seen and some also profit booking can be seen. And in yesterday's session also, after the gap up opening, the markets have shown some profit booking, and they have closed below the opening only. And uh, today also some volatility can be seen in both Nifty and Bank Nifty. Both are almost flattish. Bank Nifty is almost 0.20% up, and Nifty is almost 0.33% up. So both these indices are showing some flattish move. Also, if you look at the global markets, yesterday the US markets were also very volatile, especially Dow Jones. Dow Jones was showing initially
positive return, while Nasdaq was in red. But if we see at the end, the Dow Jones also lost almost all its gains, and Nasdaq closed in deep red. So overall, global markets are also uncertain and volatile. And post market hours of the US, Facebook parent company, that is Meta, result came, and they were below expectation. And but still the US futures, and especially Dow Jones futures, are somewhat quietly volatile and flattish positive, but the Nasdaq future is significantly down by more than 0.5%. So overall, still the market sentiments are volatile till the 2nd November. On 2nd November, the Fed meeting outcome will be declared, and the new 75 basis points increase uh, is already been discounted by the markets. And let's see what uh, ultimately the Fed will declare. And yesterday, US GDP data also came, and they were uh, above the expectations. So the inflation is high, the GDP is growing faster as expected, and also unemployment data are also good. So overall, the economy is doing showing positive signal there, which leads to increase in the interest rates. And since the 75 basis points have already been discounted by the markets, let's see how much interest rates will be increased. Also, if we see the USD INR, then we can see that USD INR is currently on the spot market, is currently at the level of 82.31, and today it is currently almost flattish, and its recent high was about 83.20. From those levels, almost 90 paisa uh, recovery has been seen in Indian rupee against US dollar. So the Indian USD INR is also uh, showing some of the recovery. Now we will discuss what it is expected for the Indian markets for next few trading days. For the today, since today is the Friday and last working day of this calendar week, therefore some volatility can be seen. And currently the uh, Nifty, Bank Nifty are showing some flattish to positive move, some flattish to positive move. मिस्टर योगेश राजपूत हिंदी में बात करने के लिए ये बता रहे हैं। हिंदी के लिए हम रोज सुबह 10:30 बजे एक और लाइव सेशन में आपके साथ आते हैं। आप उसको देखना ना भूलें, बाजारों के सितारे, जिसके अंदर हम एग्रो कमोडिटीज, नॉन एग्रो कमोडिटीज और शेयर बाजार के अंदर अपना विश्लेषण देते हैं हिंदी के अंदर। और जो 9:30 बजे का जो लाइव सेशन है उसमें हम इंग्लिश के अंदर देते हैं, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेजेस के जो ऑडियंस है, चाहे वो इंग्लिश के और हिंदी के, उन सभी के लिए विश्लेषण हमारा मिले। तो आप हमारा 10:30 बजे का लाइव सेशन देखना ना भूले हिंदी लैंग्वेज के लिए। सो कंटिन्यूइंग विद दिस एपिसोड, Bank Nifty and Nifty are currently almost flattish to positive, but for next, uh, if we see for the today's session, then some volatility can be seen and some profit booking also can be seen in Nifty, Bank Nifty. Although for the medium term, uh, the stock market sentiments are positive, but for the short term, some volatility and profit booking can be seen. Therefore, we need to be very careful, and it is advised not to hold big positions for the short term perspective for next week. Although we can consider buying for the medium to long term perspective, that is not an issue. But for the short term, we should not hold big positions for the next week, since the volatility can be seen. And for the medium to long term perspective, we can consider uh, HDFC Bank, Axis Bank, Tata Motors,
also Insolation Energy Limited. These stocks can be seen for the next few trade for the medium to long term perspective. We can consider these stocks, but for the short term, it is advised to be alert and wait and watch in the current market, and it is not advised to hold big positions for the next week. So that's all for the today's episode, and I hope you liked our analysis. You should go to our standard disclaimer also that all this information are purely for research, training, and educational purposes. We shall not be responsible for any profits or losses incurred by you in case you go for any trade. And you should consult your personal financial advisor and your personal wisdom if you take any trade. So that's all for the today's episode. See you in the next episode. Thank you and good day.